Right. So the first information we need to know is about how the periodic trends vary in the periodic table. Got it? And if you recall, we used to learn first what is atomic radius. And whenever we talk about radius, there are three types of radius an atom can possess. One is covalent radius, which implies कि when there is a covalent bond forming between two atoms, अगर कोई covalent bond form किया है दो atoms के बीच में, then yeah, if there is any covalent bonding form between two atoms here, then the distance between the distance between the two nucleus is what we call it as internuclear distance, and half of that is the covalent radius. Half of that is covalent radius, but itna yaad rakh lena, right? And if this is the same atom, A and A atom, then half of that will be the internuclear distance, correct? But if there are two different atoms, but ये JEE में आ चुका है तो आपको ये समझना है, if there are two different atoms, like one atom is bigger, one atom is smaller, right? या कोई electronegativity किसी का ज्यादा है किसी का कम है, if that is a case, A and B type, then this distance, the internuclear distance, I would represent that as DAB, okay? And the covalent radius of if you look at the covalent radius now, there is no covalent radius defined for one particular atom here now. Okay, it is the distance of, it is the overall internuclear distance that can be defined. Okay, so covalent radius is only defined for pure atoms like H2 combining with each other, N2, O2, इस तरह के। और यहां से ये इंफॉर्मेशन लेकर हम लोग DAB कैलकुलेट करेंगे। So how do we calculate DAB? That is internuclear distance will be covalent radius of A, covalent radius of B minus 0.09 into delta of X, and X here represents electronegativity. Or delta X represents electronegative difference. So this has been asked in JEE, so you would better remember that if covalent radiuses are given for two elements, how do we calculate the internuclear distance between them? Clear? I guess all of you understood that. Yes. Right. Next is metallic radius, second one. First being the covalent radius here, I'll write it as A. Next, metallic radius. Metallic radius is just the half of what we write down here. So metallic radius Rm is equal to dmm by 2. मतलब यही अगर ये दोनों metals होते हैं और same atoms के metals हैं, correct? So in this case, what would happen? Here atoms won't be overlapping. Here they'll be just touching with each other this way. So they won't overlap, rather they will touch like this, and that will be the distance dm here, internuclear distance dmm. So this is about the metallic radius. Metallic radius will be half of that. That's it. Van der Waals radius. So next one is Van der Waals radius. So Van der Waals radius RV will be equal to same DAA by 2 or DBB by 2 depending upon two atoms touching each other. For example, if hydrogen is concerned, if this is hydrogen molecule, let's say, if this is hydrogen molecule and I have one more hydrogen molecule here, correct? Now two hydrogen molecules cannot come very close to each other. This is the maximum closest distance they can come. So the distance from here to here, that this distance is called the intermolecular distance. This is the intermolecular distance. Intermolecular distance. And half of that represents the Van der Waals radius. If for any element, if all three radiuses are present, then Van der Waals will be bigger than metallic than covalent.
So this is the basic idea we all must have. इसमें किसी को कोई doubt? Nice. No. Right? Now I'm not getting into the idea of what is Slater's rule, how exactly Z effective is calculated, but I'm directly writing the trends. So let us see the variations or trends of various radiuses. And first we will compare van der Waal radius. Van der Waal radius from left to right. Lithium will have maximum, then beryllium, then boron, then carbon, then nitrogen. Got it? Sorry, a covalent radius. Covalent radius, if we compare, lithium is greater than beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, and neon. Okay, neon is being calculated hypothetically. इसका कोई एक्चुअली में वैन डर वाल रेडियस नहीं, कोवेलेंट रेडियस नहीं होता है. It only has van der Waal radius. But if you observe van der Waal radius, then neon will be the highest, then lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, and fluorine, which means same logic applies to these also. Here they do not have actually any van der Waal radius as such, but if given a chance van der Waal radius exists, this will be the order. Okay, so this is in general. If you talk about cases, you have to take in general that except group 18, rest all you can take it as covalent radius only. I think this logic is clear, everyone. So this is for group from left to right. ये हो गया left to right. How does this vary in D block now? So if you look out for 3D, correct? 3D में metallic radius exist करता है, correct? So if you see scandium, right from scandium, vanadium, chromium, initially the radius will start decreasing, correct? Up to, sorry, titanium, scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, correct? Iron. Up to this point, the size will start decreasing. Sorry, decreasing. Yeah. Up to this point, size will start decreasing. After iron, cobalt, nickel, and copper almost have similar size. Okay. Or rather, we can say that copper will be slightly bigger than nickel. Okay, and that will be lesser than zinc. Okay. So you can approximately think like this: vanadium and zinc has almost the same, almost same size, right? So if the question is asked which is the biggest, scandium, which is the smallest, nickel. Done. And the similar logic goes for the group down that. Okay, so how the size will vary down the group, which means if you take scandium के नीचे जो आएगा उससे जिंक विच इज कैडमियम, यहाँ तक कंपेयर करोगे तो ऑलमोस्ट सेम वेरिएशन दिखेगा आपको. Sir, for 3D, 4D, 5D, all three? Yes, beta. 3D, 4D, 5D, all of them will have similar variation. Okay. Now, usually when you go down the group, now comparing 3D, 4D, and 5D, if you compare these three, I can say scandium will be definitely smaller than yttrium, which is the next element, which is smaller than lanthanum. Okay. But the minute we talk about the next element, that is titanium, it is definitely less than zirconium, but it is almost same as that of hafnium. It is almost same as that of hafnium. And you know that जब टाइटेनियम से स्टार्ट करके आप एंड तक जाओगे ना ऐसे, तो आप ये देखोगे कि ऑलमोस्ट एटॉमिक साइजेस 4D और 5D का सेम होता है. 4D and 5D will have same size, 3D will have relatively smaller size, and this is because of lanthanoid contraction. Lanthanoid contraction. Lanthanoid contraction happens because of poor shielding of 4f electrons. बस इतना याद रखना, right? So this is what happens as you go down the group. Clear? Now F block.
Now if you look at the F block elements, right, lanthanum onwards, first lanthanum से compare करेंगे, lanthanum से लेकर very very slowly it will start decreasing, sorry, it will start decreasing towards luthadium, that is cerium, then Prosidium, next ND, PM. These are all different elements which we have. Then SM. आपको सिर्फ ये याद रखना है कि suddenly यूरोपियम की यहाँ पे बढ़ जाता है. यूरोपियम will be more, then gadolinium, right? Then terbium, okay? Then STY, okay? HO, polonium, erbium, right? Sorry, यहाँ से फिर से decrease हो रहा है. Gadolinium, and it will start decreasing towards erbium, and from here again it will start decreasing towards this and suddenly increases. क्या लिखा? Europium is greater than gadolinium and gadolinium is smaller than all of this, and terbium is smaller than, नहीं उल्टा लिखा मैंने, sorry, gadolinium is greater than TB, terbium and all of this, and now TBM will be less than ytterbium and ytterbium is greater than luthadium. आपको सिर्फ एक्सेप्शनली ये दोनों याद रखने हैं, यूरोपियम एंड ytterbium. Okay, EU is europium and WB is ytterbium. So europium and ytterbium exceptionally rise up, but other than that rest all will be decreasing from lanthanum to luthadium. Why would this happen? Because this will attain a configuration of 4F7 half filled stability, while this will get a stability of 4F14. Got it? Because of these two, you will see there is a rise in the size, but otherwise it will always be decreasing. So can you repeat the reason, please? If you see the overall configuration of europium beta, it will be something like this: 6s2, 4d1, sorry, 6s2, 5d1, 5d1 and 4f7. Okay, this is half fill stability coming on europium, while in ytterbium is 6s2, okay, 5d 5d1 and 4f14. This would be the configuration. Clear? Sorry, 5d0, 5d0 and 4f14. Okay, and same way here also 5d0 and 4f14. Now because only there is a half fill stability on 4f or 4f14 here, the overall size of the molecule atom will start increasing. अच्छा, क्यों increase होगा? Because of pore shielding. When you have more symmetrical arrangement of elements, you will have pore shielding, and that increases the size of the atom. Okay. सर पोर शील्डिंग होगा तो साइज डिक्रीज करेगा ना? Sorry, I meant to say better shielding when you have symmetrical electronic distribution, so size will be bigger. Let me write down that. Better shielding in case of half filled or fulfilled stability. Okay. Right. Now, mainly you got to learn about this, how the size is varying from left to right, down the group for 3D and F. And coming to the group 14, group 13, 14, all of these P block elements हम लोग separately anyways पढ़ते हैं, तो अभी मैं उसमें डिटेल में नहीं जाता हूँ P block में. Now, coming to this ionic trends, which means when you have ionic bonds, how the trends are changing. First, size of F minus, Cl minus, Br minus and I minus. If you compare them, then I minus is bigger in size. And the same logic applies to the next element also. O2 minus, S2 minus, Se2 minus and helium
tellurium 2 minus. Okay. And hydrogen, if you compare that with lithium, hydrogen is H plus is the smallest of all because it is just a proton, then K plus, then rubidium plus, cesium plus. Okay. And all of these are in the gaseous form, students. All of these ionic trends are in the gaseous form. Okay. Next, beryllium 2 plus, magnesium 2 plus, and calcium 2 plus, strontium 2 plus, barium 2 plus, and radium 2 plus. This is how it changes this particular group. Now, suppose if you have a bigger size ion and a smaller size, more charged ion or less charged ion. So more the charge, more will be the size if it is anion. If charge is anion, we know that O2 minus is bigger than O minus, S2 minus is bigger than S. Okay. And for isoelectronic species, you will find out that C4 minus is greater than N3 minus, O2 minus, F minus, Na plus, Mg plus 2, and Al plus 3. This is the trend. And same logic goes below that also. So if you compare silicon 4 minus, phosphorus 3 minus, okay, sulfur 2 minus, chlorine minus, potassium plus, and calcium 2 plus, and gallium plus 3. Right. So these are the trends. Chaitanya, we just started discussing about the trends beta, atomic and ionic trends. Just try to follow them. Yes, sir. Finished, everybody? Just make a note of it. So 1 second. Sir, for cation, more charge, smaller the size, right? Yes, beta. More the charge, you can see that here, ना? जितना ज़्यादा charge बढ़ते जा रहा है, size उतना ही कम होते जाएगा. Okay. Sir, Yes, beta. but if we go on adding electrons, will the size always increase? If we go on adding, Electrons, the size will always increase. yes, size will always increase, no matter what stability you are getting. Sir, if I do not know if this is out of context, but won't when एक ही shell में हम ज़्यादा electrons डाल रहे हैं, yeah, pull increase होके size छोटा नहीं होगा क्या? If एक ही shell के अंदर डाल रहे हैं, if you're shifting a shell, then size बड़ा होना समझ में आता है. But if in the same shell, wouldn't the net intermolecular pull increase? Repulsion बढ़ेगा ना? See, when you are adding any electron to any particular shell, the electronic repulsions within that shell increases. Okay. Okay, sir. And to accommodate that potential difference, the only way for them is to increase their size. Okay, sir. हाँ, मैं Right. Done, sir. Right. Now, next thing you may have learned about ionization. I'll just quickly go through some important terms about ionization. Ionization, we know that it is all about removing an electron. So energy is required here. So you would remove an electron here, right? And delta H here is always greater than 0, which means endothermic. Ionization is always endothermic in nature. Now, if you keep on removing electron one after the other, right? No matter whatever stability you might be getting or not, right? This way, if ionization energy required is IE1 here, IE2 here, IE3 here, and so on, then it will keep on increasing in terms of the total ionization up to nth electron. Okay. So this is one thing you must remember, like ionization will always keep increasing on
removing one electron irrespective of whether it is becoming stable or not. ठीक है. Now if you check out the ionization trends from left to right, ionization trends, I would orally discuss this. We don't have to write. I'll just only write the order first. Lithium is less than beryllium. Okay. Sorry, boron less than beryllium, less than carbon, less than oxygen, less than nitrogen, less than fluorine, less than neon. The exception what you have find is beryllium and nitrogen here. Correct. So nitrogen should be before oxygen and beryllium should be before boron. The reason happened is beryllium has electrons in 2s, 2s2 and 2p0. This is beryllium. While boron has 2s2, 2p1. Now one thing you got to remember, everybody, that when it comes to screening factor or screening, penetrating power of various subshells, then S will have much better penetration compared to that of P, D, F, and so. Penetration implies that how close it can go to the nucleus. S orbitals will be much closer towards the nucleus. So removing an electron from S is always difficult from the same shell. So suppose if you are trying to remove electron from 2s compared to that of 2p, always 2s removing electron will be difficult. Similarly, 3s, you are trying to remove it from 3s or 3p, then removing electron from 3s will be difficult. And that is exactly what has been faced in boron and beryllium. On the other hand, when it comes to nitrogen, it is the half-fill stable form. So nitrogen is half-fill stabilized, while oxygen is about to become half-fill stabilized if you remove an electron. Right? So removing an electron from oxygen is easier compared to removing the electron from nitrogen. So this is the general trend which you will see. The same trend goes down the group also. So for instance, if I tell you about sodium less than aluminum, magnesium, silicon, and sulfur, phosphorus, chlorine, argon, and so on. This is the trend which takes place. Okay. So, Yes, beta. sir, here why can't we say that S is fully filled, so it will be difficult to remove electron S is fully filled. in beryllium, so Ah. it is difficult to remove electron. No, that is not the right logic. अच्छा, filled electrons को remove करना difficult है, ये किसने बोला? ये तो मतलब मतलब logic ऐसा कहाँ से आया? तो नहीं, आप फुलफिल हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन वैसा का है ना सर? No, fulfill half fill का complication ये था कि fulfill with stable form. Like अगर वो completely filled and noble gas configuration आता है, it attains an extra stability. Okay. But if it is only 2s2, it is not a noble form, right? It is neither onto 2p6, neither onto, it is something like helium. Understood? So fulfilled का ability तभी, इनफैक्ट fulfill रहने से एटम में इंस्टेबिलिटी ज्यादा होता है unless if it is a noble gas. ठीक है. रीजन बीइंग, आप एक इलेक्ट्रॉन दोनों इलेक्ट्रॉन को एक ही जगह पे रख रहे हो, राइट? सो इट विल टेक अ टोल ऑफ पेयरिंग एनर्जी. सो उसको पेयर करने में जो एनर्जी लग रहा है ना, राइट? सो दैट इज एन एक्स्ट्रा एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड. Clear everybody? Right. Let me go to the next trends here. Okay. आपको ये बस याद रखना है कि the regular trend is observed as you go down the group. ये थोड़ा irregular trend था, which means if you take rubidium, then strontium will be lesser than indium, correct? Then tin, then antimony, then tellurium, iodine and xenon. यहाँ पे बिल्कुल regular trend है. देखो, normally strontium should be greater than indium and antimony should be greater than tellurium, correct? मतलब ये जो हाफ फिल्ड नेचर है या पेनिट्रेटिंग पावर है, ये कहां तक अप्लाई होता है बेटा? इट इज अप्लाइड ओनली अप टू थर्ड पीरियड एलिमेंट, आई मीन फोर्थ ग्रुप तक अप्लाई होता है.
5th group, 6th group, 7th group में hardly it is been observed. Not group, sorry, periods. 5th, 6th period में hardly you will see this has been observed. Okay, clear everyone? Right. Okay. अभी देखो down the group, ionization down the group. Down the group, first and second period will have regular trends. This will have a regular trend. Okay, but when it comes to aluminium and gallium, they have almost the same first ionization. First ionization, if you look at it, aluminium and gallium. Okay, so gallium में completely d electrons है, so this will have a poor shielding of electrons here. Correct. So down the group कम होना चाहिए, but gallium और aluminium का almost same रहेगा. Okay, because D configuration, if you look at it, it is 3s2, 3p1, sorry, 4s2, 4s2, 4p1 with 3d 10 electrons, which means gallium already has 3d 10 electrons here, which because of which there is a poor shielding और इसका size कम रहेगा. In fact, I haven't discussed the trend of the size, but just for the sake of understanding here, boron से aluminium size बढ़ता है, and from there size will decrease towards gallium. Okay, not this drastically, इतना decrease होता है. फिर इंडियम की तरफ बढ़ता है, फिर थैलियम की तरफ थोड़ा सा बढ़ता है. Correct. So you can see this is aluminium, this is gallium. So size is smaller for gallium actually. So that's why you will see the trend down the group. It should have been increased, but gallium will be almost same as that of aluminium. Okay, and the similar logic applies for indium as well as thallium. So removing electron from thallium becomes difficult. Almost they are of similar size. Indium और thallium almost similar size है, but ionization thallium का ज्यादा होता है compared to that of indium. Clear everybody? So overall trend, if at all I write, ionization, boron will be greater than thallium, greater than gallium, which is almost same as that of aluminium, which is greater than indium. Very very important. ये काफी बार पूछ चुके हैं एग्जाम्स में. So ionization ये याद हो जाना चाहिए. Clear everyone? Now this is for 13. Now check about for 14. For 14, you would see carbon greater than silicon, greater than germanium, greater than lead, greater than tin. So the exception here is lead. Lead will have high ionization compared to that of tin. And ये सब क्यों हो रहा है बेटा? लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से. Reason here also why thallium has more. This is because of lanthanide contraction. That's the reason. Okay, and if you go towards group 15, correct, group 15, if you see the ionization, nitrogen will have more than phosphorus, then arsenic, then antimony, okay, then bismuth. Correct. So almost similar trend यहाँ पर, ज़्यादा difference, इधर कोई difference नहीं है. And D block. Now if it comes to D block here, you can see scandium will be greater than yttrium, greater than lanthanum. Okay, this is mostly based on the size, how it is going. Clear everyone? I think ionization सबको clear है ना? यही trends आपको पूछ सकते हैं. Yes. Right. Next, electron affinity. If you look out for electron affinity is ability to accept electron. So if it accepts an electron, it will become an anion. And delta H, we are expecting always to be less than 0. This is our expectation. Okay. Wherever there is electron affinity involved, which means we expect कि ये हमेशा energy release करेगा. Okay. And by definition, EA is always equal to minus delta H of EG. EG means electron gain enthalpy. Okay. But this is defined at 0 kelvins. Clear? हाँ, अभी ये देखना इसमें कैसे ट्रेंड चेंज होता है. फर्स्ट, if you go from
left to right, what are the exceptions you will find? Okay, first lithium, right? अच्छा, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ बेटा, ध्यान से देखना. लिथियम से लेकर हम लोग जनरली ट्रेंड क्या ऑब्जर्व करते हैं? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, then carbon, nitrogen, oxygen, oxygen, fluorine, and neon, right? Now, when it comes to removal of adding of electrons, right? Beryllium, right? It won't like to take electrons in 2p because 2s is very much closer to that of nucleus. So it is not ready to accept electrons in 2p. Okay. Nitrogen already has an half-fill stability, not ready to take electrons. Neon is not at all ready to take electrons because it is already at a very stable form. So that's why you can think like this. Electron affinity, okay, is negative for these three cases. These three cases. बाकी सारे cases में positive है. Clear? Or if you write it in terms of electron gain enthalpy, ये सारे केसेस में नेगेटिव है, बस इस केसेस में पॉजिटिव है. सो डिपेंडिंग अपॉन द डेफिनेशन स्टूडेंट्स, अगर आपको ये पूछा गया कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो ये तीनों को नेगेटिव बताओ. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो वो तीनों को पॉजिटिव बताओ. ओके, सो नाउ द ट्रेंड वुड बी clear to you that lithium will be less than boron, then carbon, then oxygen, then fluorine, and after that you will see इनमें से least होगा neon. So neon will be the least, right? After that it is nitrogen, after that it is beryllium, and then nitrogen. This is the trend. इसमें सिर्फ वैल्यू बेस्ड है, आपको इसमें कोई एनालाइज करने की जरूरत नहीं है. So it is just a value based. So remember, this is the trend. Right. So this is electron affinity trend, everybody. Next trend, one thing you need to remember is going down the group. Now down the group, what you need to know is that every second and third period element has a variation. That is, boron will be lesser than aluminium, carbon is lesser than silicon, nitrogen is lesser than phosphorus, oxygen is lesser than sulfur, fluorine is lesser than chlorine. So chlorine in fact is the most it has the most electron affinity out of all. I guess this is clear, everyone. Make sure you all write down this electron affinity. Sir, what did you say about chlorine? Can you please repeat? Chlorine has the highest energy releasing power, or it has the highest electron affinity. Okay, sir. Clear? Now, just like how carbon is much greater than nitrogen, same trend will follow. Silicon will be much greater than phosphorus. Then germanium will be much greater than antimony, and so on. Okay, वो follow होते रहेगा नीचे की तरफ, वो ध्यान रखना. Right. Now there will be a question in JEE Advanced. This has been asked: which of the following has positive delta H Eg, electron gain enthalpy? Which of the elements have positive delta H Eg? Okay. Right. Which of them, beta? देखो. All of these, when it comes to noble gases, clear? All noble gases, which includes helium, neon, argon, krypton, xenon. ठीक है? Next, group 2 elements, which includes beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium, and nitrogen. Group 15. Group 15 very important, only nitrogen बेटा. उसके नीचे phosphorus भी एनर्जी रिलीज करता है, ऑब्जर्व नहीं करता है. ओके, तो एक बहुत ही अच्छा इंटीजर टाइप क्वेश्चन बनता है. तो you can see these are the elements which will have positive delta H electron gain enthalpy. Done.
Next. So once, हाँ बेटा, doubt? no sir, done. Just wanted to know. Okay. Last thing you need to know about electron affinity is that the second electron affinity of any element, any element is always negative, which means delta H electron gain enthalpy is always positive. So if you take positive delta H electron gain enthalpy, if I write anything like O minus लिखो, मैं F minus लिखूंगा, C minus लिखूंगा, C plus minus 4 लिखूं, N3 minus लिखूं, S2 minus लिखूं, any of them, if you write it as minus already, उसके ऊपर आप कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐड करने जाओ तो एनर्जी विल ऑलवेज बी रिक्वायर्ड. Right, everyone? This is the next important point. And last point, important point you need to know about electron affinity is that second electron affinity is always high value in magnitude compared to first electron affinity, which means, for example, if you take O changing to O minus, okay, इसमें energy, let's say some x amount of energy release हुआ है, और इसमें O to O2 minus, यहाँ पे y amount of energy required. So what I meant to say that the magnitude of y is always greater than magnitude of x, and this is valid for all the elements. Clear? So आपको कभी-कभी क्वेश्चन ऐसे दे देगा कि O gas is changing to O2 minus by adding 2 electrons. अब बताओ delta H will be greater than 0 or less than 0? This will always be greater than 0. Great. Next, electronegativity. Electronegativity trend wise it will decrease with decrease in radius. तो आपको यहाँ पर थोड़े trend समझना. Electronegativity is inversely proportional to radius. It is directly proportional to z effective, and it is inversely proportional to screening effect, okay, or shielding constant, right? And it increases in increase oxidation state, positive oxidation state. So higher the positive oxidation state, higher the electron affinity, and lower the negative oxidation state, lesser will be the, sorry, higher the negative oxidation state, lesser will be the electronegativity. Okay. And it is directly proportional to percentage S character as well. Percentage S character आपको पता है that Sp will be more in terms of electronegativity compared to that of Sp2 compared to that of Sp3. This is about percentage character. Clear everyone? बस इसमें से ये थोड़ा इंफॉर्मेशन याद रखना बेटा, आगे जाके बहुत हेल्प होने वाला है. If we have a triple bonded carbon, its electronegativity value would be around 3.25, and you might be noticing that it is greater than nitrogen, okay, which is greater than nitrogen. ये important है, greater than nitrogen. And if it is a double bonded carbon, it will be 2.75. And if it is a single bonded carbon, right, if it is a single bonded carbon, its electronegativity is 2.5. Just you need to notice that this is greater than hydrogen. Hydrogen is 2.1. Okay. And these values are completely measured on Pauling scale. So what is Pauling scale? Pauling scale का direct formula भी use कर सकते हो. It is calculated as the electronegativity difference between two elements
is equal to 0.102 under root of delta AB. Okay, and which delta AB means bond energies between A and B, and here bond energy is represented in kilojoules per mole. The same formula can be turned out as XA minus XB is equal to 0.208 under root of delta AB if the bond energy is expressed in kilocalories per mole. जे में अभी तक जो भी क्वेश्चन आया किलो कैलोरीज पे आया है बेटा, जूल्स पे नहीं आया, तो आप अकॉर्डिंगली एक्सप्रेशन याद कर लेना। सर सभी के याद रखने के जो आपने लिखे हैं किसके बेटा? सर सभी वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेकंड पीरियड के। हाँ सर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अभी मैं ट्रेंड बताता हूँ बेटा, कैसे याद करना है, अभी लिखा नहीं है मैंने, वैल्यूज के साथ बताता हूँ। ओके, सर नाइट्रोजन का कितना होता है? नाइट्रोजन का 3.04। ओके सर। क्लोरीन से कम। हाँ, ये एक रॉन्ग मिसकंसेप्शन है, क्लोरीन का हमेशा ज्यादा होता है। ठीक है, ओके सर। ठीक है। अब देखो डेल्टा ए बी कैसे कैलकुलेट करेंगे इसमें से। डेल्टा ए बी राइट is about the energy observed, which is energy observed between AB, which is observed energy, minus AB theoretical energy. Okay, अब ये theoretical energy कैसे कैलकुलेट करेंगे? observed वैल्यू तो आपको दिया रहेगा, theoretical we will calculate that as E of AA, bond dissociation energy of AA into bond dissociation energy of BB. ये इससे पहले भी हमने पढ़ा ना, बॉन्ड डिसोसिएशन हाउ वी हैव टू यूज इट। DAB हमने जब कैलकुलेट किया था तो हमने डेल्टा यही यूज किया था, हमने चेंज इन डेल्टा ऑफ एक्स यूज किया था ना, वहां पे डेल्टा ऑफ एक्स इज नथिंग बट इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। तो वो फॉर्मूला यहाँ पर जुड़ जाएगा, उसको एनर्जीज दिया तो इससे कैलकुलेट करेंगे और वहां पे DAB कैलकुलेट हो जाएगा। सर वो EAB होगा ना? क्या बेटा? सर लेफ्ट में सबसे लास्ट लाइन EAB is equal to EA into EBB. हाँ, EAB है, सॉरी ये AB है, E of AB, right. Now see the Pauling scale values beta. Fluorine is the highest, then oxygen, chlorine, nitrogen, bromine, iodine, sulfur, carbon, phosphorus, hydrogen, boron, silicon, lithium. Okay. अब इसके बाद हमको सारे याद नहीं करना है, आपको क्या क्या याद करना है वो भी बता। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज, इफ यू लुक एट इट, दिस इज 4 3.5 करेक्ट। नॉर्मली नाइट्रोजन का 3 लिखते हैं, इट इज जस्ट, मैं बहुत एक्यूरेट वैल्यू दे रहा हूं बट अप्रोक्सीमेटली 3 लिख सकते हो, 3 करेक्ट। एंड नाइट्रोजन के बाद आता है कार्बन विच इज 2.5 करेक्ट। उसके बाद आता है बोरॉन विच इज 2.1. अगेन दिस इज आल्सो 2.04 एंड हाइड्रोजन इज जस्ट अबव दैट विच इज 2.1। पहले ये वाला ट्रेंड याद करो, ठीक है। 4 3.5 3 2.5 2 and 2.1, ठीक है। Then come to chlorine. Chlorine is slightly better than nitrogen, and bromine is around 2.85, and iodine is around 2.55, and sulfur, अच्छा मैंने उल्टा लिखा, सल्फर और आयोडीन का, सल्फर एंड आयोडीन 2.58 and this is 2.55. Okay. And phosphorus is again 2.18, slightly better than hydrogen, and silicon is 1.8, lithium is 1.0. ठीक है। सो सर ये सारे वैल्यूज याद करना है नहीं, आपको ट्रेंड याद करना है, बट आपको एक रिदम याद हो जाएगा तो बेटर है। 4 3.5 3, then you have 2.5 2 and then 1.5 and 1. 1.5 is of बेरिलियम, बट मैंने लिखा नहीं, बेरिलियम को इतना जरूरत नहीं, सो लिथियम यूज आता है। सर तो मतलब sp carbon is more electronegative than chlorine. Say it again beta, what electronegative? sp hybridized carbon is more electronegative. sp hybridized carbon is More this electronegative one, than right? chlorine. If you compare C triple bond C plus Cl, correct,
then electronic flow will be towards this side. Yes. Okay, same is the case with nitrogen. इंडक्टिव इफेक्ट जब अगर आप देखते हो तो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन को ज्यादा देना है इंडक्टिव इफेक्ट. ओके, डन सर. राइट. नेक्स्ट मिलिकन स्केल, ये सब आपको पता है, थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूँ. मिलिकन स्केल was relatively older than Pauling scale. He suggested that we can take the averages of electron affinity and ionization divided by 2, express these in terms of electron volts. Okay, and Pauling scale was found out to be Millikan scale divided by 2.8, मतलब 2.8 times ज़्यादा है. Okay, and last scale is Alred Rochow scale, which is XAR is equal to 0.359 Z effective divided by R square. Z effective एक्चुअली स्लेटर्स रूल से कैलकुलेट करते हैं. ये सिलेबस में यूजुअली पूछा नहीं जाता है बेटा, कैसे कैलकुलेट करना है. अभी जेई मेन में क्वेश्चन आया था जिसमें सिर्फ फॉर्मूला पूछा गया है, तो आप सिर्फ फॉर्मूला याद कर लें. राइट. क्लियर एवरीबॉडी? अच्छा, पॉलिंग स्केल और ये दोनों कैसे रिलेट होंगे? पॉलिंग स्केल इज इक्वल टू आलरेड रोचो स्केल प्लस 0.744. ये रिलेशन इन सबका. ओके, नेक्स्ट, this is been asked very frequently, that is Haney-Smith equation. Haney-Smith equation tells us what is a percentage ionic character present in the bond. Percentage ionic character, which is 16 times mod delta x, which is the electronegative difference, plus 3.5 delta x whole square. Right? So delta x is the difference in electronegativity between two elements. Clear everybody? Now, electronegativity is a very, very important tool to get an idea about all the acidic character, basic character, thermal stability. ये बहुत सारे information electronegative characters दे सकते हैं. So well, let us see about the application part. So if you look at the application of electronegativity, first starting with basic oxides. So you can see LiO, BeO, B2O3, CO2, N2O5. These are regular oxides from left to right. And if you see, this is basic, correct? So this is basic, and I'm writing more like a basic trend here. And BeO is amphoteric, which is greater than, right? Sorry, मतलब इतना basic character है. और यहाँ से मैं बोल दूंगा कि ये दोनों, ये सारे तो acidic है. When it comes to acidic, N2O5 is more. So this is how the acidic character changes. Acidic character में हमेशा oxidation state check करो. +5, +4, +3. Higher the oxidation state, more will be the acidic nature. Okay. The same logic goes for the next case also, that is Na2O greater than MgO, right? And these two are basic in nature, which is greater than Al2O3, which is amphoteric in nature, right? Next, silicon SiO2 is lesser than P2O5, lesser than SO3, lesser than Cl2O7. This is about the acidic character. And you can see oxidation state बढ़ते जा रहा है. +4, +5, +6, and +7. This is how it will change. Got it? Now, within the same atom, for a same atom, if you look at it, like N2O, we have NO, then we have N2O5, sorry, N2O3, then we have NO2, and NO2 or N2O4 is same, and then we have N2O5. So if you look at these cases for nitrogen, the first two are neutral oxides. Rest all are acidic oxides, and this is how the acidic oxides increase their acidity. Overall,
overall there are 4 neutral oxides beta, neutral oxides in the entire periodic table, which includes N2O, NO, carbon monoxide and H2. So ये याद होना चाहिए. So these are the only oxides you can see which are neutral. Amphoteric. Sorry, neutral. Neutral है, sorry, neutral. Okay. Now when it comes to amphoteric, overall amphoteric oxides throughout the periodic table, if you look at it, that includes BeO, Al2O3, correct? PbO, PbO2, SNO, SNO2, and Cr2O3, okay, V2O5. These are the ones which are most commonly asked. Okay. So I guess all of you understood that. Yes. सर ग्रुप 1 और 2 हमेशा बेसिक ऑक्साइड बनाएगा ना? Yes बेटा, सारे बेसिक एक्सेप्ट बेरिलियम ऑक्साइड. Beryllium oxide is amphoteric, ना? Amphoteric, yes. Finished? सर जैसे कि पहले मेजर टेस्ट में हम लोग को काउंट करना था नंबर ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड सर, तो फिर वो याद ही रखना है ना सभी के सभी? हाँ, ये याद रखना है, लिस्ट इतना लिस्ट याद रखना आपको. ओके ओके. और भी है, मैंने ऐड नहीं किया है इंटेंशनली क्योंकि वो थोड़े डिबेटेबल है. उसको मतलब एनसीईआरटी में देखो कि ग्रुप 13 में गैलियम ऑक्साइड, सॉरी जर्मेनियम ऑक्साइड है, उसको बोला है एम्फोटेरिक विथ स्लाइटली एसिडिक कैरेक्टर. मतलब वो एम्फोटेरिक ही है बट उसमें फिर भी एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होता है. TeO3 एम्फोटेरिक बट स्लाइटली बेसिक कैरेक्टर. अब ये क्या होगा? Bi2O3 like bismuth Bi2O3 that is amphoteric with slightly basic character. तो अगर इतना ज्यादा एक्सेप्शनल वर्डिंग में दिया है तो तब हम लोग वो लिखेंगे, बट जनरली ऐसा नहीं पूछा गया है. जे में जो भी पूछा गया सिंपली पूछा गया विच ऑफ देम आर एम्फोटेरिक, एंड दीज आर द वंस व्हिच आर बीन आस्क्ड. ओके, नाउ कमिंग टू द एसिडिक वंस. सर आपने ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या बोला था एसिडिक के लिए? हाँ, मैं अभी वही एप्लीकेशन कर रहा हूँ कि नॉर्मली आप जो भी ऑक्साइड्स रिलेटेड एसिड्स होते हैं ना, उन सारों के एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होंगे विथ इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर. ओके ओके. सो क्लोरीन में अगर ऑक्सीडेशन स्टेट 7 है तो नॉर्मली वो ज्यादा एसिडिक होगा कंपेयर्ड टू दैट ऑफ सल्फर व्हिच इज एट +6, लाइक दैट. Okay. Okay, sir. Okay, sir. Let me write down few of them so you will get a better idea. See, if you see some acidic oxides, if you see acidic acidic groups, first HOCl is lesser than that of HClO2, lesser than that of HClO3, lesser than that of HClO4, and this is purely on the basis of oxidation state. You can see +3, +5, +7, right? This is the first trend. Next, HNO2 lesser than HNO3, and H2SO3 lesser than H2SO4, right? H3PO4, अब देखो यहाँ से ट्रेंड, H3PO4 is greater than H3ASO4. Why? ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है तो डाउन द ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएगा if the oxidation state is same. Okay, and lastly, this is the only exception you will find, that H3PO2 is more acidic than H3PO3 is more acidic than H3PO4, despite the fact कि यहाँ पे +1, +3, +5 है. Okay, this is an exceptional order. Clear बेटा? ये याद रखना. Now, Okay, sir. generally if you see any element, for example, to decide acidic or basic, ये कैसे करेंगे? Sorry, to decide ionic or covalent, based on electronegativity कैसे करेंगे? For instance, if you take सर एक डाउट है. हाँ बेटा. सर वो एक्सेप्शन क्यों आ रहा है?
phosphorus P double bond O, OH, H and H है, राइट बेटा? ओके, Yes, sir. अब देखो यहां से H प्लस हटाया तो आपने क्या देखा, ये इधर से इधर रेजोनेंस मार रहा है बस, करेक्ट? Yes, sir. अब इसमें देखोगे तो O P डबल बॉन्ड O माइनस OH और H है, ठीक है? ये यहाँ से यहाँ पे रेजोनेंस कर रहा है ना, बट यहाँ पे इसका प्लसर इफेक्ट is trying to reduce the stability of P double bond O minus. Yes, Yeah? sir. Understood. तो जितने ज्यादा OH ग्रुप्स रहेंगे उतना ज्यादा प्लसर इफेक्ट होगा ना बेटा, और प्लसर हाँ. इफेक्ट विल ऑलवेज डिक्रीज द एसिडिक कैरेक्टर, ये तो हमने लर्न किया है, हाँ. प्लसर या प्लसम इफेक्ट, या तो Yes, sir. यही Stabilize रोल हो करेगा. रहा है इसके, ठीक है? Yes, sir. Now to decide whether this molecule is ionic or covalent, what we do, हम लोग दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस देखेंगे बेटा, ओके? सो फॉर इंस्टेंस इफ यू चेक आउट 3 पॉइंट, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू है 0.7, ऑक्सीजन का है 3.5 एंड ये है 2.1, ठीक है? क्लियर? नाउ व्हाट यू विल सी कि ये दोनों में डिफरेंस कितना है, ये दोनों में डिफरेंस कितना है? 2.3 नहीं 2.8 2.8, या, और यहाँ पर 2.1 था, तो इसमें डिफरेंस कितना है बेटा? 1.4 1.4, ठीक है? Now, if the electronegative difference is greater than 1.7, right? Greater than 1.7, we say it has ionic character more than that of covalent character. Covalent character, ठीक है? If electronegativity is less than 1.7, we'll say the other way, that covalent character is more than that of ionic. अगर वो equal है तो we say 50-50% ionic है, ionic and covalent is 50-50%, ठीक है? सो हम लोग क्या कह सकते हैं, O और H के बीच में कोवेलेंट कैरेक्टर है, सीजियम और ऑक्सीजन के बीच में आयनिक कैरेक्टर है ना? नाउ इफ यू मेक दिस टू ऐड इट टू वाटर, राइट बेटा? जैसे आपने वाटर को ऐड किया तो वाटर इज पोलर मॉलिक्यूल ना, पोलर हमेशा पोलर बॉन्ड्स को Ionic. ज्यादा तोड़ता है, तो पोलर बॉन्ड कौन सा है? ये वाला है ना, ज्यादा पोलर ये है। तो आप इस तरह से डिसाइड कर सकते हो कि दैट सीजियम व्हेन यू ऐड इट टू वाटर will give OH minus rather than that of H plus। ये पॉइंट क्लियर है सबको? अब ये देखो HOCl लेते हैं, HOCl को हमने अगर वाटर में डाला तो अब ये देखो ये 2.1 है, ये 3.5 है, ये 3 पॉइंट कितना था रे? 14 ना, 3.14, करेक्ट? 14 था, 16 था शायद, 16। सो अब ये दोनों में डिफरेंस देखो बेटा, इधर डिफरेंस कम है ना और इधर डिफरेंस ज्यादा है, तो अब ये वाटर में डालोगे तो आपको डिसोसिएशन किधर से मिलेगा? इधर से H प्लस एंड OCl माइनस। सो आई होप नाउ यू अंडरस्टूड एसिडिक या बेसिक कैसे डिसाइड होता है, राइट? So because this will give OH minus, so we say CSOH is basic in nature. HOCl is giving H plus, so that's why we say it is acidic in nature. I think ये logic clear है सबको? Yes, sir. Right. Next we got to learn about what is सर ये लॉजिक यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, कुछ universally exceptions applicable. नहीं Yes, है। all of them, no exceptions. So if you say any acid, I mean any molecule, if you want to decide whether it is acid or base, you just check out with this, okay? And in fact, it comes to that extent that pH 3 is insoluble in water just because its electronegative difference almost zero है ना? Phosphorus is 2.16, hydrogen is 2.1, so almost zero है. That's why it is insoluble in water. ठीक है? So जो almost this is like non-polar. Clear? So it is always valid in all the cases. Next, lattice energy, and this the best way to look at it बेटा, जब आपको बिल्कुल random data given है, आपको idea नहीं है, तो आपको electronegative data थोड़ा बहुत पता है ना, उससे जज कर लो कि ये dissolve होगा या नहीं होगा। Next, lattice energy. Lattice energy is something which depends upon how strong the bond is, right? Which means if you have any ionic cation and any ionic anion in a gaseous state, and if they form Mn solid like this, then energy is released,
and this released energy delta H is what we call it as lattice energy. Lattice is usually written as U. ठीक है, this is lattice energy. अब lattice energy किस factors पे depend करता है? It depends upon how is R plus plus R minus charge. ठीक है, inversely proportional to R plus plus R minus. So bigger the anion, smaller the lattice energy. Bigger the cation, smaller the lattice energy. Smaller any of that, then more will be the lattice energy. I think ये logic पहले हमने learn किया है, आपको याद होना चाहिए. तो भी order check करो. If you take Li x, any x, if you compare that with NaX, Kx, Rbx, CSx, तो ये क्या होगा? This is how the lattice energy will vary. Because x is same, lithium is cation size is changing. So smaller the cation, more is the lattice energy. Same logic applies for the next BeX2, MgX2, CaX2, and so on. Okay. And if the metal is same, suppose if the metal is same, Mf will be greater than Mcl, greater than Mbr, greater than Mi. If it is the same metal, and this happens for lithium plus to cesium plus, and the other way around also. Sir, because the anion is small, that's why. Yes, anion is small this time. MCl2, Mbr2, and so on. This is from beryllium 2 plus to barium 2 plus. Done, everyone? इसमें कोई doubt नहीं होना चाहिए, right? Yeah. Now coming to the next term, hydration energy. We will use hydration energy also a lot, going ahead in different groups. So hydration energy tells us that if I take any gaseous ion, M plus gas, and I'm converting that gaseous ion to aqueous ion, then definitely energy is released, and the released energy is called hydration energy. Okay, and it is not just for cations, it is the same thing for anions also. If you take anion and it becomes an anion, aqueous anion, then the energy is released, and that is hydration energy. Okay, now hydration energy depends upon what factor? It depends upon the sum of reciprocal of cations and anions. Correct? And अच्छा, मैंने बाकी फैक्टर यहाँ पे डिस्कस नहीं किया था, वो भी फैक्टर डिस्कस करता हूँ, सॉरी. It is also proportional to Q1 and Q2 beta. मतलब charge on the cations and anions. So if you compare lithium Li2O compared to that of BeO compared to that of B2O3, now you can see here it is +1, +2, +3. So which has more charge here? B2O3 has more charge. So this is how the lattice energy varies. Clear? Same way, if you take Na2O and MgO, right? So between these two, this is the one which will vary. Okay. Same way here also, if you have. Sir, just a second, can you show? Hello. No, sir, done. So ये नोट कर लेना बेटा, Q1 Q2 पे भी डिपेंड करता है. अच्छा, हाँ, इसमें कर लिया. अगर ऐसा कोई केस आया, बहुत रेयरली आएगा केस, तो अगर R plus R minus comparable नहीं हो पा रहे, then always go with Q1 Q2 more dominant. This is a more dominant factor, dominant than R plus and R minus comparisons. Okay. सर तो पहले चार्ज चेक करना है ना बेसिकली. हमेशा पहले चार्ज चेक करना है. ठीक है सर. I meant to say, for example, आपने ऐसे कंपेयर किया बेटा, Li2O कंपेयर किया और BaO कंपेयर किया, ठीक है? तो इसमें चार्ज वाइज ये ज्यादा डोमिनेंट है ना. हाँ, इसमें हो सकता है इसमें लैटिस एनर्जी ज्यादा. ओके, ठीक है सर. Now look at this case. Hydration energy would vary plus R plus some of this, and if you check out the charge also, here this will be Q plus and Q minus charge. Individually check करना है हमेशा. इसमें हमेशा चार्ज इंडिविजुअली चेक करना. Okay, now if you see the hydration energy, अभी group 1 का चेक करते हैं. Li plus aqueous ion, right? Because it is very small in size, it will get hydrated a lot, so that will have
very high hydration energy compared to Na plus, compared to K plus aqueous, compared to so on cesium plus aqueous. Same is the case with beryllium plus 2. Beryllium plus 2 काफी ज्यादा hydrated होता है compared to magnesium 2 plus aqueous and so on. And if you see fluorine also, that will be highly hydrated. Then chlorine, ये सब हमने organic में already पढ़ा है, right? And if you compare to that of Fe plus 2 aqueous compared to that of Fe plus 3 aqueous, hydration energy will be much more for this. Cu plus aqueous is much lesser than Cu2 plus aqueous. So these are the cases for hydration. Okay. Now, ionic mobility, इसमें एक important application होता है ionic mobility. Ionic mobility will be always inversely proportional to, right, hydrated metal with a hydrated ion, correct, plus or minus. Got it? Bigger the size of the hydrated ion, less will be the ionic mobility. Which means if you take Li plus, right, if you take Li plus aqueous, this will have much bigger size. So then that will be smaller in mobility compared to Na plus, compared to K plus, compared to Rb plus aqueous, compared to cesium plus aqueous. This is ionic mobility. This is how the ionic mobility varies. Okay. Clear on that logic? Same, F minus will be lesser than aqueous, will be lesser than Cl minus aqueous, lesser than Br minus aqueous, lesser than I minus aqueous. हमने इसी के बेसिस पे तो हमने ये डिसाइड किया था कि ये न्यूक्लियोफाइल की तरह ज्यादा बिहेव करेगा या बेस की तरह बिहेव करेगा. This is what we learned in GOC. सर ये सब तो हो गया था ना, तो वापस क्यों कर रहे थे आप? क्या बेटा? ये सब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में हो गया था ना. ये सारे फंडामेंटल्स अभी ग्रुप्स में लगेंगे बेटा, इसके लिए मैं एक बार रिवाइज करा रहा हूँ. ओके सर. ओके, तो अब जैसे अभी ग्रुप 1 ग्रुप 2 ये सब फिर से वापस आएंगे, यही सारे टर्म्स. ठीक है. हाँ श्योर, काफी कुछ याद नहीं है. तो वहां पे हम लोग फिर जल्दी ब्रशअप करेंगे ना. वहां पे ये सब आपको एक बार ट्रेंड याद हो गया तो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या इग्नोर. यस सर. राइट. एंड देन इफ इट कम्स टू हाइब्रिडाइजेशन, आई थिंक यू ऑल नो हाउ टू डू दैट. हाइब्रिडाइजेशन में टच नहीं करूंगा. किसी को कुछ डिस्कस करना है हाइब्रिडाइजेशन बेसिस? नहीं सर, वो क्लियर है. नहीं. ओके. सो इसमें अभी एक चीज जो हाइब्रिडाइजेशन में समझना होता है, दैट इज अबाउट फाइंडिंग नंबर ऑफ p pi d pi bonds. या ये पूछना रहा था सर. हाँ, क्योंकि यही आगे जाके ग्रुप्स में बहुत ज्यादा यूज होता है ये वाला फैक्टर. ठीक है. नाउ हाउ इट विल बी यूजफुल, लेट अस सी. फर्स्ट we'll start off with a simple molecule SO3. ठीक है बेटा, everybody look at it. SO3 से start करते हैं. And sulfur got a configuration of 3s2 3p6 as the 3p4 as the outermost electronic configuration. So it has 2 electrons in here and 4 electrons in p. We are approaching with 3 oxygens. If 3 oxygens has to come, we need to have minimum 3 sigma bonds. ना, ये याद रखना. जितने एटम्स आते हैं उतने सारा सिग्मा बॉन्ड्स तो हमको एग्जिस्ट करना पड़ेगा उस एलिमेंट के साथ, राइट? So we need to make 3 sigma bonds, so which means I require 3 unpaired electrons for sure. ठीक है. And since unpaired electrons will be best formed in a hybridized format, I have to migrate this electron anyways, correct? So if I migrate that, what do we have? We will have 3s का 1 electron हो जाएगा. Now in 3p we will be having only 1 electron. अभी भी एक ही इलेक्ट्रॉन है p में, but मुझे 2 electrons चाहिए ना, मुझे 2 unpaired electrons चाहिए. So because I require total of 3 unpaired electrons, one is here, but I need one more here. So what I'll do, rather than migrating here, correct, ये वाला migration, ये इलेक्ट्रॉन को मैं इधर ही माइग्रेट कर देता हूँ, करेक्ट. सो एक्चुअली इज दिस माइग्रेटिंग टू दिस वे एंड आई अनपेड इलेक्ट्रॉन, पेयर इलेक्ट्रॉन इधर लिखता हूँ, अनपेड इधर.
and now D has one electron in it. Okay, clear beta? I will be using these three orbitals and intermixing them to make an hybridized orbital sp2, because मुझे 3 सिग्मा बॉन्ड्स के लिए क्या चाहिए होगा, sp2 hybridized orbital चाहिए होगा. So first I'll make that hybridized orbital and make the sigma bonds here. So oxygen, 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 sigma bonds बन चुके हैं. But the octet is not completed for oxygen yet, क्योंकि अभी भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन रह गया है ऑक्सीजन में, क्योंकि उसने एक ही इलेक्ट्रॉन सल्फर के साथ शेयर किया है. सो अनपेड इलेक्ट्रॉन इज लेफ्ट, and at the same time sulfur also has one pair here and one unpair here, and oxygen requires one more electron. So sigma बनने के बाद there is only one option. What does it has to do? It has to do pi bonds now, है ना? So to make pi bonds, now I will migrate this electron here. So now I will have beta 3 orbitals here, 1 2 3, and all of these are sp2 hybridized, and then I'll have one orbital and 2 orbitals with unpaired electrons. And what are these beta? This will be 3p orbital and these would be 3d orbitals, है ना? So now we can make 3p and 2p. Same way 3d and 2p, 3d and 2p. इस तरह से हम लोग pi bond बना सकते हैं. So you can see I can make a pi bond here, and this pi bond will be p pi and p pi, that is 2p pi and 3p pi. And I can make one pi bond here, which will make it as p pi, that is p pi coming from oxygen, P pi. and d pi coming from sulfur. And same way here also I'll make p pi and d P pi, pi. which is also coming from sulfur. D is coming from sulfur. Clear everybody? That's how you need to judge it, like how many p pi d pi bonds are present. So you can So see तो मतलब SO3 has 2 p pi d pi. A metal. तो मतलब टेक्निकली सभी को सिंगल सिंगल मतलब ईच सबसे मतलब इसमें एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा, और फिर हम लोगों ने सिग्मा बॉन्ड्स बनाए और जो बचे उसके साथ लिंक किया. हाँ बेटा, पहले सिग्मा बॉन्ड्स बनाओ. दैट इज अवर फर्स्ट दैट इज फर्स्ट थिंग वी नीड टू डू. सिग्मा बॉन्ड्स बनाने के बाद आप जज कर पाओगे कि इसको कितने पाई बॉन्ड चाहिए होंगे. सर पर ये 3p सिंगल कैसे हुआ? 3p सिंगल कैसे हुआ? यहाँ से मैंने एक माइग्रेट किया ना डी की तरफ. हाँ सर. ओ ओके. उसमें एक इलेक्ट्रॉन बच गया और डी में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए. ओके. और करने का रीजन क्या था? करने का रीजन ये था कि मुझे 3 पाई बॉन्ड को अकोमोडेट करना है. अब ये बोले सर 3 पाई बॉन्ड, व्हाई डोंट यू मेक ऑल 3 डी पाई? देखो बेटा, आप ओवरलैपिंग को समझो पहले. इफ इट कम्स टू ओवरलैपिंग कैपेसिटी, करेक्ट, सबसे पहले बेस्ट ओवरलैपिंग होता है 2p पाई एंड 2p पाई का बेस्ट ओवरलैपिंग होता है, राइट? आफ्टर दैट इट इज 2p पाई एंड 3d पाई. इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट टू सी कि 3p पाई का बॉन्डिंग इतना ज्यादा स्टेबल नहीं है as much of this. ठीक है. Then we will have 2p pi and 3p pi, and then 3p pi and 3p pi and 3d pi and 3p pi and 3p pi and 4d pi. After that comes 4p, 3p and 3p, 3p pi and 3p pi. ठीक है. सो p 3p और 3p के बीच का पाई बॉन्ड है ना, बहुत ही वीक होता है, राइट, एज कंपेयर टू दैट ऑफ d के साथ होता है. रीजन बीइंग 2p ऑर्बिटल इज लाइक दिस एंड 3d ऑर्बिटल विल बी डायरेक्शनल लाइक दिस ना. अगर ये 2px है, ये 2px है, तो ये दिस विल बी 3dxy, and that will be much more closer to overlap as compared to that of 2px trying to bond that with 3px. इसमें overlapping tendency कम रहेगा. Got it? Okay. That is one reason. Second thing, देखो 3p अभी ये नहीं सोच सकते कि 3p को हम लोग पूरा माइग्रेट कर सकते हैं, because
empty orbital create करना, which means it requires huge amount of energy, and hybridization is not the case where you are supplying energy, correct? It is just a potential distribution happening within the atom. So ये intrinsic है, मतलब within the molecule adjustment of energy है. It is not externally something is supplied. So that's why we cannot migrate all the electrons to D. Yes. अभी देखो नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं. सो इफ यू हैव SO2 यूजुअली बच्चे गलत करते हैं, तो थोड़ा SO2 को अच्छे से समझो. उसके बाद आपको मैं एक दूंगा, आप खुद से करना है. इफ इट इज SO2, you can see how the p pi d pi bonds to be checked. We have 3s2 and 3p4. मुझे कितने सिग्मा बॉन्ड्स चाहिए बेटा? 2. Only 2. So which means I require only 1s and 1p unpaired electron, है ना? तो ये इलेक्ट्रॉन को इधर मैं भेज सकता हूँ और s में एक अनपेड बना सकता हूँ, राइट? p में एक अनपेड बना सकता हूँ और ऐसे रख सकता हूँ और ये दोनों को हाइब्रिडाइज कर सकता हूँ. बट ये गलत है. रीजन बीइंग, आप सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन को ही फैक्टर मत देखो. हाइब्रिडाइजेशन तो करना ही है, बट हाइब्रिडाइजेशन एक लोन पेयर के साथ भी किया जा सकता है ना, करेक्ट? Hybridized orbital can be made with a lone pair also. So now you need to look in terms of the pi bonds also, that if sulfur makes 2 bonds with oxygen, to accommodate oxygen I require 2 pi bonds, 1 pi bond here and 1 pi bond here. So I honestly require only 2 unpaired electrons to make this pi bond on sulfur. But if I start migrating this, right, and leave behind this lone pair will give immense repulsions. A pure orbital lone pair will give immense repulsion. So that's why instead of only taking 2 unpaired electrons, I will take all of these 3 and make it as sp2 hybridized orbital, where one orbital has a lone pair and the other 2 lobes have unpaired electrons. Okay, and then the 3d orbital, which is empty, I will let this p electron migrate here. So now I will have set of 3 new orbitals. One is this, और ये सारे के सारे sp2 hybridized orbitals हैं, and then there is one unpaired orbital here, and d में एक electron है, correct? So this is pure p, this is pure d, and these two pure forms will make pi bonds, and these hybridized ones will make sigma bonds. So now that's why SO2 structure would be like this. यहाँ पर एक lone pair रहेगा, and this one pi bond is p pi and p pi pi bond, and one pi bond is p pi d pi pi bond. Everybody understood this? Yes sir. सर तो मतलब पहले जो दो ये लोन पेयर्स बच रहे थे वो रिपल्शन कर रहे थे, इसलिए एक डी में चला गया, जिससे डबल बॉन्ड बना के एक ही लोन पेयर बचा. उल्टा सोचो. आप ये सोचो कि मुझे दो पाई बॉन्ड एकोमोडेट करने ही है ना, करेक्ट? सो मुझे 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 2 ही अनपेड इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो लोन पेयर क्यों रखूंगा? तो लोन पेयर को हाइब्रिडाइज में भेज दूंगा. ओके सर. ओके, प्लीज डू दिस वन एवरीबॉडी. ClO3, sorry, HClO3. HClO3, इसमें बताओ कितने पाई बॉन्ड्स, p pi d pi बॉन्ड्स? I'm not very much clear with SO2. हाँ, I'm not very much clear with SO2. SO2. Okay, listen. SO2 demands 2 sigma bonds. यहाँ तक ठीक है ना बेटा? हाँ सर. तो मुझे 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स चाहिए. हाँ. उसके लिए मैंने S से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के P में माइग्रेट कर दिया. हाँ. ये सोच के कि P में तो एक अनपेड है, S में भी एक अनपेड है, दोनों को मैं मिक्स कर सकता हूँ. ओके. हाँ. तो लॉजिकली मुझे sp मिक्सिंग करना चाहिए था, S और P को मिक्स कर देना. Yes sir. Yes sir. बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर मैं 2 ही पाई बॉन्ड भी अकोमोडेट कर सकता हूँ, है ना, क्योंकि 2 ही ऑक्सीजन है, तो 2 पाई बॉन्ड हो सकते हैं. 2 पाई बॉन्ड के लिए मुझे 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना, बट मेरे पास 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, राइट? हाँ. इसमें से एक को मैं अनपेड बना सकता हूँ, ये दोनों को अनपेड बना दिया, ये दोनों को, राइट, अनपेड बना. ठीक है. तो इस पेयर का क्या करें? कोई भी पेयर प्योर ऑर्बिटल में होता है तो वो बॉन्ड पेयर्स को ज्यादा रिपल्शन देता है, VSEPR थ्योरी. हाँ. करेक्ट. सो प्योर ऑर्बिटल में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे तो बहुत ज्यादा रिपल्शन देता है.
बट वही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में डाल दोगे तो रिपल्शन काफी हद तक कम हो जाता है ना। ये लॉजिक पे मैंने क्या किया, इंस्टेड ऑफ मिक्सिंग ओनली दीज टू आई हैव मिक्स 3 ऑफ देम, ठीक है, एस को भी और 2 पी को मिक्स किया, तो मुझे 2 पी को मिक्स करने पर क्या आएगा हाइब्रिडाइजेशन sp2, sp2 और उसमें से एक पोजीशन ऑफ हाइब्रिडाइज्ड लोन ऑर्बिटल पे। लोन पेयर ऑक्यूपाई करेगा, 2 पोजीशंस अनपेड इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई करेगा। तो अनपेड वाले साइड में सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे और एक लोन पेयर बच जाएगा उसके। सर तो मतलब ये एक्सेप्शन से लर्न करना है ना, प्रेडिक्ट नहीं करना है। ये ऐसे लिख लिख के लर्न करना है, मतलब सॉल्व करना है। सर और ये हम तो लोगों ने एसपी नहीं बनाया क्योंकि मतलब पी पाई ज्यादा स्टेबल है इसलिए ना। ना एसपी बनाने पर ये बॉन्ड, ये जो लोन पेयर है वो प्योर पी में रुक जाता है ना। देखो ऐसे मैं बता हाँ दूं, सर। अगर सल्फर को एसपी बनाया, ठीक है, आपको क्या मिलेगा बेटा, ये मिल जाएगा 180 डिग्रीज पे। यस सर। बट इधर ही एक प्योर ऑर्बिटल है जिसके ऊपर लोन पेयर है, तो यहाँ पे देखो 90 डिग्रीज का रिपल्शन मिल रहा है ना दोनों तरफ। हाँ सर। वीएसईपीआर थ्योरी क्या कहता है कि आपको 90 डिग्रीज रिपल्शन अवॉइड करो, आप जितना हो सके दूर दूर रखो मॉलिक्यूल्स को। अभी दूर रखने के कारण इसमें बॉन्ड एंगल कितना हो गया, 120 120 डिग्रीज हो गया, तो मतलब ये काफी कम हो गया ना रिपल्शन। इसी के यस लिए सर। मैं प्योर रखने के बजाय मैं हाइब्रिडाइज बना दे रहा हूँ, लोन पेयर को भी हाइब्रिडाइज बना दूंगा। सर ऐसे इसमें क्वेश्चन जेई में सेम एग्जांपल से आते हैं कि नए नए आते हैं हर साल? अभी तक तो सेम ही आए। ओके, कोई नया आए तो आपको करना है, लॉजिक तो वही है। ओके सर तो हम लोग जब वो करते हैं एसपी या sp2 जब भी स्प्लिट करते हैं तो उसमें हम लोग को बेसिकली हर मॉलिक्यूल में देखना क्या होता है? एसपी में स्प्लिट कर रहे हैं मतलब हम लोग मतलब माइग्रेट कर हम रहे हैं लोग जब भी इलेक्ट्रॉन। हाइब्रिडाइज कर रहे हैं हाँ तब हम लोग को बेसिकली देखना क्या हाँ, होता है? देखना ये है कि हाइब्रिडाइजेशन रिलेट्स टू ओनली सिग्मा बॉन्ड्स, करेक्ट, हाँ हाँ and sigma bonds is all about single bond, first bond between the two atoms, correct. हाँ So you just have to count with respect to central atom how many single atom bonds we have to make, हाँ। तो वो है ना। लोन पेयर कब लेना है ऐसे कंसिडरेशन में, देखो ऐसे लोन केसेस? पेयर तब आया ना, हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, SO2 इसलिए इंपॉर्टेंट केस है क्योंकि लोन पेयर का आइडिया नहीं आता है जल्दी, है ना। लोन पेयर को तब लेना चाहिए तब आपको पता है कि वो प्योर फॉर्म में है या हाइब्रिडाइज में, किस में लोन पेयर बेटर सर्वाइव कर सकता है। हाइब्रिडाइज में बेटर सर्वाइव करेगा कंपेयर टू दैट ऑफ प्योर फॉर्म। प्योर मतलब अनहाइब्रिडाइज्ड, ओके। ये अनहाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में रखोगे, देखो ये लोन पेयर को आप अनहाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में रखोगे, ठीक है, तो इसमें ये रिपल्शन दे देगा ना बेटा। हाँ यस सर, ये जो मैंने समझा। दिखाया था, ये देखो ऐसे हाँ दिखाया, हाँ हाँ, समझा ये समझा, वाला यस सर। रिपल्शन दे रहा था, करेक्ट, दोनों तरफ। हम्म। तो वो मैं अवॉइड करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, वो लोन पेयर को भी मैं हाइब्रिडाइज बना देता हूँ। हाँ हाँ समझा, तो यस। पहला आप लॉजिक यहीं से स्टार्ट करो कि मुझे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने बनाने, ठीक है। ठीक है। वो बनने के बाद चेक करो कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स एकोमोडेट हो रहे क्या, अगर उतने में हो गए तो लोन पेयर के बारे में सोचो ही मत। ओके, हाँ ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। तो अभी उसी उसी लॉजिक से करो, ये दोनों, ये करो एक बार और एक ये करो, एक CO3 करो, ये दोनों करो, ये दोनों अच्छे केसेस है, HClO3 एंड HCO3 सब लोग करो एक बार। राइट, करेक्ट करना। HClO3 can you check once again now?
Yes. This is the skeleton. I'm helping you with the skeleton. कि कितने सिग्मा बॉन्ड्स होने चाहिए ये तो आपको पता होना चाहिए. No, Athar, check once again. Yeah, no, correct. Now it's fine. Athar, फिर से एक बार चेक करो बेटा. Second one is fine, Athar. First one incorrect है. Check. पर इसमें क्लोरीन और ऑक्सीजन दोनों का बनाना होता है क्या? क्या बेटा? नहीं, क्लोरीन का है. HCl नहीं, सिर्फ क्लोरीन के बारे में बताओ. ऑक्सीजन वैसे ही sp3 है, हम लोग को उसके ऊपर डिस्कशन करने की जरूरत. सर क्या मतलब क्या पूछा गया है? आपको नंबर ऑफ p pi d pi बॉन्ड्स पता करना है विथ रेस्पेक्ट टू क्लोरीन. ओके सर पहले वाले का देखो, माइग्रेशन किया सबने यही वाला, क्योंकि मुझे टोटल 3 चाहिए ना, 3 सिग्मा बॉन्ड चाहिए. 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड चाहिए. 3 sigma bonds means I require 3 unpaired electrons. So I made 1 s and 2 unpaired. Okay. सर और वो एक लोन पेयर वाला ना. हाँ, मतलब हाइब्रिडाइजेशन अभी बताता हूँ. हाइब्रिडाइजेशन को क्या करना पड़ेगा, मुझे उसी के अंदर डालना पड़ेगा. व्हाई? बिकॉज आई कैन अकोमोडेट ओनली 2 पाई बॉन्ड्स ना बेटा. इस ये ऑक्सीजन तो पाई बॉन्ड नहीं करेगा क्योंकि उसने ऑलरेडी 2 सिग्मा कर लिया. सो देयरफॉर आई हैव टू मेक दिस एज sp3 एंड ये जो दोनों रहेंगे डी में, ये दोनों के दोनों पाई बॉन्ड्स बना देंगे. तो यहाँ पर एक पाई बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड बनेगा. दैट विल बी डी पाई पी पाई. पी पाई डी पाई या डी पाई पी पाई सेम है. ओके, डी पाई पी पाई. clear? Please check that everyone. Have you got it? Yes, Vedant. But with what type of bonds? Those are 3 bonds which you have written. Those are p pi p pi or p pi d pi. P pi D pi. Right. So all of them are p pi d pi there. So this xenon is 6s2, sorry 5s2 and 5p 6 and 4d 0. Sorry, 5d 0. So 2 electrons here, 6 electrons here, and 0. So 1 electron will migrate from here, 1 will migrate from here, 1 will migrate from here. So it's 3, right? 3 beta. This is the situation which it will have. 3. Okay. Now we will be mixing all of this 4 to make sp3 hybridization, and these 3 will be involved in d pi. So all of these pi bonds which are forming, यहाँ पर एक लोन पेयर भी होना चाहिए जिसमें ये sp3 है और ये d pi p pi है, सारे के सारे d pi p pi. So 2 d pi p pi here and 3 d pi p pi here.
क्लियर? सर ये जो सब शेल है और उन लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा सर, तो फिर वो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग में लिखना जरूरी है कि कहीं भी हो सकता है? कहीं पे भी हो सकता है, एस में सिंगल होना चाहिए, ये जरूरी है। ओके, ओके सर, डन। एवरीबॉडी एल्स? Done. Okay. Now let us see, for understanding bonds and how the hybridization. सर आप थोड़े कंपाउंड्स दे सकते हो प्रैक्टिस करने के लिए घर पर? हाँ सर। ये भी कर लो, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है। MnO4 माइनस, ठीक है, MnO4 2 माइनस। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन ये होता है बेटा, sd3 होता है। ओके, यहाँ पे p ऑर्बिटल नहीं होगा, sp3 की तरह यहाँ पे sd3 होगा। ठीक है, सर Mn कौन से Mn में ना, MnO4 में ना? Mn में, हाँ, MnO4 माइनस, MnO4 2 माइनस, इन सब में। ठीक है, तो ये ट्राई कर लो, दैट विल बी सफिशिएंट। सर अभी करना है? अभी नहीं बेटा, बाद में करो आप। ठीक है, इस नोट कर लेना, ये ट्राई कर लेना। राइट, नाउ लॉट ऑफ क्वेश्चन, लॉट ऑफ reactions as we go towards group 14, 15, 16 will be involved where hydrolysis is being done. ये हाइड्रोलिसिस को एक कॉन्सेप्चुअली पहले समझ जाते हैं, फिर उसको हम लोग अप्लाई कर पाएंगे इन द ग्रुप्स वी डिस्कस। ओके, सो लेट मी राइट डाउन विद दैट। फर्स्ट, हाइड्रोलिसिस थ्रू SN1 mechanism in inorganic. Okay, so here if you look at it, for instance, if you take NF3 and H2O, correct, आप एक्सपेक्ट करो कि यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस होना चाहिए, बट देयर वोंट बी नो रिएक्शन हियर, no reaction. NF3 does not undergo NF3 does not undergo hydrolysis because H2O is also a nucleophile, NF3 is also a nucleophile, since this is carrying a lone pair on it. So there has to have an empty orbital for sure to make any type of hydrolysis. Clear? So यहाँ पे hydrolysis इस तरह से नहीं होगा. So instead, if you are expecting hydrolysis to happen here, then there has to have an empty orbital forming, which means, for instance, if you take NF3, correct, first it has to form NF2 plus and making an empty orbital on nitrogen with F minus. ठीक है, अब ये जो NF2 बना है, it is like this, यहाँ पर एक लोन पेयर है और फ्लोरीन है, and then it has an empty orbital, positive charge. So water as a nucleophile will attack on this empty orbital, correct, and makes this as NF2 with OH2 plus. और यहाँ से H plus हटा दो, तो then we'll have HO and NF2 bond will be forming. And if you do this for 3 times, you will have NF2 NOH. And if we do hydrolysis further, we will have HF coming out of it, and finally we will have NOH thrice. Okay, NOH thrice, देखो बेटा, we have learned this, that carbon, if you have 2 OH groups, is unstable, right? And that will turn out to be, अगर ये क्या हो जाएगा, this will immediately turn out to be an aldehyde form, removing out aldehyde or ketone form, bringing out water. Same thing happens here also.
NOH thrice है, तो आपको देखोगे कि HO, N, OH and OH is present with a lone pair on it. Correct. So here these two will come out as water and we'll have this as HO and double bond O with a lone pair. So we'll get this as a nitrous acid. टिपिकली जितने भी मैकेनिज्म्स आगे जाके हम लोग करेंगे इनऑर्गेनिक में, ये इसी तरीके से होंगे, या तो SN1 टाइप या तो SN2 टाइप. Here everyone, right? So overall reaction, if at all I write down that NF3 plus 3 moles of H2O is giving us 3 moles of HF plus HNO2. Sorry. If we take the reaction where we have something like CCl4, पहले देखो मैं वो केसेस ले रहा हूँ जिनके ऊपर कोई भी empty orbitals नहीं है. And if we try to hydrolyze this, ठीक है? If we try to hydrolyze this, one thing we can expect, there are two paths we can expect. CCl3 plus Cl minus. This is one path we can expect. Got it? But here CCl3 plus is highly unstable form. So this path it won't take. Rather, it will take the other form, which is SN2 route. This will go via SN2 route. So first जो मैंने लिखा था ये SN1 type है. अब ये जो hydrolysis हो रहा है, hydrolysis via SN2 route. In SN2 route here, we can see CCl3 OH is forming plus HCl will form. How does that happen? You can see chlorine is a good leaving group. Unlike fluorine, यहाँ पर fluorine फिर भी निकला है, correct? Because there was no other alternative. But here chlorine can be relatively better leaving group. So simultaneous attack is possible here. So water can attack simultaneously from here, and we can get C, Cl, Cl, Cl with OH2 plus. And you remove H plus from here. So we will get C, Cl, Cl, Cl and OH. Okay. ऐसे दो बार होगा बेटा CCl3OH, and if you hydrolyze one more time, you will get this as CCl2OH twice. And CCl2OH twice, ये further होने के लिए problem क्या है, ये दो OH इतने ज्यादा unstable है इस पे, they immediately come out as water and forms C double bond O, Cl and Cl, and this is phosgene gas, a very poisonous gas, phosgene gas. इसी के लिए क्लोरोफॉर्म को मॉइस्चर के क्लोज नहीं लेके आना चाहिए. अगर क्लोरोफॉर्म को मॉइस्चर के पास लेकर आएंगे तो फॉस्जिन गैस प्रोड्यूस होता है. और आपको पता है ना, क्लोरोफॉर्म के जो वेपर्स होते हैं, राइट, सो दे विल गिव यू फॉस्जिन इंस्टेंटली. सो दैट्स व्हाई इट विल बी पॉइजनस. क्लियर? एवरीबॉडी अंडरस्टूड दैट? Yes. Right. Now when you have any empty orbitals, अब यहां से केसेस स्टार्ट होते हैं बेटा empty orbitals के. फॉर एग्जांपल इफ यू हैव SiCl4 एंड दैट ऑन हाइड्रोलिसिस, ठीक है, इन केसेस में क्या होगा, ये टिपिकली SN2 ही होगा इसमें. ठीक है, यहाँ पे कैसे सर होगा? सर फर्स्ट जिन के बाद रिएक्शन नहीं होगा कुछ? क्या बेटा? ये फर्स्ट जिन के बाद क्लोरीन्स निकलने का बोल रहे हैं ना. हाँ. यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है तो नहीं निकलेगा. फिनाइलिक टाइप. ओके. यस सर. Silicon will have this 4 groups here that on hydrolysis, correct, ये यहाँ से अटैक करेगा और यहाँ से निकल जाएगा. So we will have 4. ऐसे आप सिलिकॉन बनाओगे तो OH, Cl, Cl and Cl बनेगा, राइट. अब इसको फर्दर आप रिएक्ट करोगे 3 moles of H2O, so we will have SiOH4. देखो सिलिकॉन is sufficiently big enough to hold this way. ठीक है, ये ऐसे होल्ड कर सकता है, एंड दिस इज कॉल्ड सिलिसिलिक एसिड. दिस इज कॉल्ड सिलिसिक एसिड. इनफैक्ट ये मॉलिक्यूल इस तरह से स्टेबल भी रहता है. अनलाइक कार्बन, दिस मॉलिक्यूल विल बी स्टेबल इन दिस फॉर्म. क्लियर ऑन दिस? So if we compare the rate of hydrolysis, correct, rate of hydrolysis, correct,
It mainly depends upon the Lewis acid strength. That is, it is directly proportional to Lewis acid strength, because all of these are Lewis acids ना बेटा. In fact, you will see that ये जैसी वाटर अटैक करे पहले d ऑर्बिटल में अटैक करता है, फिर ये Cl निकल जाता है तो वो उसमें से बदल के फिर हाइब्रिडाइज बन जाएगा. So attack will always happen based upon the Lewis acid strength. Hence SiF4 में ज्यादा लुईस कैरेक्टर होगा, एसिड कैरेक्टर होगा कंपेयर्ड टू दैट ऑफ SiCl4 कंपेयर्ड टू दैट ऑफ SiBr4. सो ये मत सोचना कि आयोडीन सबसे इजीली लीव हो जाएगा, सो दैट विल हैव मोर रेट. नो. ओके, सो दिस विल हैव मोर रेट. करेक्ट. अगर सेम एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, है सारे के सारे क्लोरीन है और चार्ज डिफरेंट है, फॉर एग्जांपल SiCl2 सॉरी Sn. If you see the rate now, if you compare SnCl2 and SnCl4, between these two if you compare, then SnCl4 will be more, because now the Lewis acid character depends on the charge. So more the charge, more will be the Lewis acid character. ठीक है. सर वो SiO4 में डाउट है. हाँ बेटा. OH4 सर इसमें ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो हाइड्रोजन क्यों नहीं कर, क्योंकि और वाटर नहीं, ऐसे बोलो, ऑक्सीजन का लोन पेयर जैसे कार्बन होता है, ऑक्सीजन का लोन पेयर हाइड्रोजन को अटैक क्यों नहीं करेगा? ऑक्सीजन का लोन पेयर हाइड्रोजन को अटैक क्यों नहीं करेगा? कौन सा बेटा? ये एंड में. हाँ सर, ऐसा जैसे हम लोग कार्बन में करते हाँ, थे ये वैसा. सफिशिएंटली बिगर साइज है सिलिकॉन. When these are sufficiently bigger size, they दोनों इनका डिस्टेंस इनफ दूर रहेगा कि उनके बीच में एफिनिटी कम रहेगा. ठीक है. अच्छा, ये भी देता है कब थोड़ा सा हीट दे दोगे, तो ये हीट दे दोगे तो सिलिकॉन बन जाएगा. थोड़ा हीट दे दोगे सिलिसिक एसिड तो ये सैंड बन जाएगा, SiO2. ओके. हाँ But at सर, room temperature it can still be exist. So तो removal of H2 के लिए size देखना होता है. Yes beta, smaller size they can't hold it. Okay, bigger Yes. size they can hold it. Clear? Yes sir. सर SiO2 क्या बनाएगा? सैंड होता है वो? हाँ, SiO2 सिलिका अगर नेटवर्क कर दो उसको, मतलब सारे बॉन्ड्स उसको नेटवर्किंग बॉन्ड बना दो तो वो सैंड बन गया ना. इस तरीके से, इस तरह से आप नेटवर्क में डाल दो तो ये बन गया सैंड. अच्छा, वो प्रेसिपिटेट होगा. मैं सोच रहा हूँ कि लिक्विड को हीट करने पे सॉलिड कैसा आएगा. ना, ये SiO2 पूरा एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाएगा ऐसे, दैट इज नेटवर्क बॉन्डिंग, उससे सैंड बनता है. वो पूरा एक क्रिस्टल की तरह दिखता है, दैट्स द सैंड क्रिस्टल व्हिच इज फॉर्म्ड. क्लियर? यस सर. राइट. नाउ if you see the hydrolysis, ये तो सिंपल केसेस हो गया, और बाकी सारे केसेस ना ग्रुप में डिस्कस करूंगा. अभी मैं सिर्फ टाइप्स डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर हाइड्रोलिसिस होना है, राइट, सो SN1 SN2 कैसे हो रहा है, ये सिंगल बॉन्ड्स में ढूंढना. अभी हम लोग डबल बॉन्ड्स में रखते हैं. सो इफ देयर आर एनी डबल बॉन्ड्स तो वहां पे हाइड्रोलिसिस कैसे होगा, तो एक बेसिक आइडिया लग जाएगा हमको. जब हम लोग मैकेनिज्म करेंगे, मतलब इनऑर्गेनिक की रिएक्शंस करेंगे, स्पेशली हाइड्रोलिसिस करते हैं, उस टाइम पे आपको क्लियर पिक्चर रहेगा कि कैसे हाइड्रोलिसिस हो रहा है. ओके, नाउ सी, फॉर इंस्टेंस, if you have hydrolysis of SO2Cl2, so you have S double bond O Cl and Cl, that you are hydrolyzing with H2. तो ऐसे केसेस में ना बेटा, बिकॉज सल्फर हैज एम्प्टी ऑर्बिटल्स, ये हमने पहले भी देखा है यू नो अल्कोहल्स और अल्काइल हैलाइड्स के रिएक्शंस में. जब भी ऐसा कोई न्यूक्लियोफाइल आता है, पहले ये अकोमोडेट कर लेता है उसको. अकोमोडेट करने का मतलब क्या है कि O माइनस बन जाएगा डबल बॉन्ड Cl और Cl, ये दोनों वैसे ही रहेंगे और उसको अकोमोडेट कर लेगा. बट अकोमोडेट क्यों कर पा रहा है? क्योंकि उसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स है. इस तरह से एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स है तो अकोमोडेट कर लेगा. वंस यू गेट दिस, अब ये देखो क्या हो गया, पेंटागोनल बाइपिरामिडल जैसा स्ट्रक्चर बना ना,
You can see this, ये pentagonal bipyramidal जैसा structure बन रहा है. फिर oxygen will try to close this and then relieving the chlorine from the group. Okay? So हमेशा mechanism ऐसे ही सोचना, even in organic or inorganic. Okay? So O double bond S, then we'll have double bond O, then OH and Cl. ठीक है, और ये HCl की तरह निकल गया, सोचो Cl माइनस जो गया वो H प्लस को भी लेकर चला जाएगा. क्लियर एवरीवन? अब ये दो बार हो जाएगा ऐसे, तो दोनों टाइम Cl निकल जाएगा. H2O. One more time, if you do that, we will have this as S double bond O, double bond O, OH and OH. तो क्या बन गया ये? Sulfuric acid. Clear everyone? So hydrolysis of SO2Cl2 will give you sulfuric acid. Okay. तो इस लॉजिक से हमको समझ में आ रहा है ना कि just like SO2Cl2 will give with H2O will give H2SO4. Similarly, POCl3 will give us H3PO4. राइट, वो सारे क्लोरीन्स हटके OH आ जाएगा उसपे. क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट. सर एक डाउट है. हाँ बेटा. सर अगर सिलिकॉन के ऊपर ये रहता क्लोरीन और फ्लोरीन दोनों रहता तो क्या होता? सिलिकॉन के ऊपर फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों है. हाँ, तो कौन सा निकलता, राइट? हाँ यस. ओके, सो इफ यू हैव दैट, देखो कंपैरिजन में आप करोगे तो SF4 SiF4 is better than SiCl4. बट इफ यू हैव मॉलिक्यूल विद इन दैट वेयर देयर इज फ्लोरीन एंड क्लोरीन, तो क्लोरीन पहले निकलेगा, बिकॉज क्लोरीन इज बेटर लिविंग ग्रुप. ओके. White can't form another double bond. Athar, which one beta? Last वाला. होता है ना H2SO4. देखो मैंने क्या बोला है, if you check out in period two elements मतलब like boron BOH thrice, इसका रीजन बिल्कुल अलग है. ये क्यों एग्जिस्ट कर रहा है? ये बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रहा है. बट अदर देन दैट, इफ यू सी कार्बन, इफ यू सी नाइट्रोजन, करेक्ट, ये सारे इनमें से ये हैंडल नहीं कर सकते हैं. कार्बन नाइट्रोजन OH ग्रुप्स हैंडल नहीं कर सकते. दैट्स व्हाई दे आर बिकमिंग CO2, और हियर इट इज बिकमिंग टू मॉलिक्यूल्स मिक्स हो जाएंगे यहाँ पे, N2O3 या N2O4 बन जाएगा ये, करेक्ट. N2O5 तक चला जाएगा ये, इनफैक्ट 2-3 मॉलिक्यूल्स मिलके, करेक्ट. my what you are asking is that सेकेंड उसके नीचे वाले ग्रुप्स जो है लाइक सिलिकॉन OH4, करेक्ट, या फॉस्फोरस OH थ्राइस, करेक्ट, या विल हैव सल्फर OH4 टाइम्स, राइट. सल्फर का OH4 साइज बड़ा होता है ना शेर. हाँ, अब ये सारे साइजेस बड़े होते हैं बेटा. दैट्स व्हाई दे कैन अकोमोडेट 2 OH groups or 3 OH groups like that. Now even in H2SO4, if you see, अगर इसको थोड़ा भी टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो क्या बन जाता है? H2O plus SO3. That will be in equilibrium ना, ये हमेशा equilibrium में रहता है. Okay, in vapor phase it will be in equilibrium with SO3. हाँ, बट H2SO4 हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड नहीं लेते, वरना आपको पता है ना कॉन्सेंट्रेटेड एकदम फ्यूमिंग होता है, राइट. राइट. Now, if you see normally when it comes to acids like caro acids, हमने देखा है Marshall's acid, caro acids, right? Yes, इसमें भी आपको एलिमिनेशन होगा, इसमें भी आपको हाइड्रोलिसिस होगा, H2SO4 बनेगा, okay? But if you have SO3, same question, if you have SO2 or SO3, suppose if you have SO2, second case, S double bond O and a lone pair, this is SO2. If you have SO2 and hydrolyze this, correct, यहाँ पे भी सेम लॉजिक, पहले ये अटैक करेगा, इधर जाएगा, सो वी विल गेट दिस एज O डबल बॉन्ड S O माइनस OH2 प्लस एंड इट हैज अ लोन पेयर, ठीक है. और वो H प्लस ले लेगा और विल गेट दिस एज डबल बॉन्ड विथ OH एंड OH. क्लियर? तो क्या बन गया? H2SO3. So become H2SO3. Got it?
And the same logic can apply with carbon dioxide also. If you take carbon So- dioxide, yes, beta. Sir, in second example, why don't मतलब और एक water क्यों नहीं आ जाता सर? यहाँ पे और एक बार क्यों नहीं आया, और एक बार भी आता है ये. If you take H2O, right, we will get this as SOH, right? SOH, OH आ जाएगा इधर और एक OH आ जाएगा, right? But इसमें क्या है, here being sufficiently high oxidation state, it can release some H plus and become very stable by resonance. ठीक है. So एक डबल बॉन्ड हमेशा रखने की कोशिश करेंगे just to make sure it will have a stable resonance form. Okay. The same logic applies to H2CO3 also. H2CO3 में भी आप बोल सकते हो कि सर ये डबल बॉन्ड O है तो ये OH निकल जाएगा ना इधर से, करेक्ट. हाँ, इनफैक्ट आपको ये पता है ना H2CO3 तो हाईली अनस्टेबल होता है, वो H2 और CO2 में ही कन्वर्ट होता है. बट उसको बहुत डाइल्यूट फॉर्म में रखोगे, एक्वस फॉर्म में, तो वो थोड़ा सा H प्लस भी तो दे देता है, बिकॉज इट कैन हैव सम रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हियर. सो OHC डबल बॉन्ड O इस तरीके से, करेक्ट. इफ यू डू नॉट कीप इन डाइल्यूट फॉर्म बेटा, वो वाटर निकल जाएगा हमेशा, वो CO2 में बन जाएगा. सेम इज द केस विद H2SO3 आल्सो. अगर डाइल्यूट फॉर्म में नहीं रखोगे तो ये वापस आ जाएगा और SO2 बन जाएगा फिर से. क्लियर एवरीवन? ओके. सो दिस इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड हाइड्रोलिसिस. डबल बॉन्ड जब रहेंगे तो कैसे हाइड्रोलाइज करना है, सिंगल बॉन्ड्स जब रहेंगे तो कैसे हाइड्रोलाइज करना है. ओके. बाकी सब ग्रुप्स में हम लोग जब जाएंगे तो डायरेक्टली वहां पे मैं मैकेनिज्म के साथ शो करूंगा कि हाउ द hydrolysis has happened and what is the product form. Clear everyone?